we are talking about the positive qualities which we should have in ourselves. So, according to yourself, what kind of positive points you should have in yourself? Just text me fast. What kind of positive things you should have in yourself? Text me. ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो आप में होने चाहिए? Ma'am, I'm unable to see the board. Priyanshi, try to see now. Try to look. Good behavior, determination, very nice answer. Studying properly, very good. Carefulness, very nice. Kindness, wow. Great, my students. These are the points which we have discussed in our earlier classes. So I am so happy that you are just have and you are just keeping all the points with yourself. I hope you are implementing also these good points in your life. Don't think bad about anyone. Right, correct. Abhijay, answer me. What kind of qualities you should have to become yourself great? Shivam Kumar, being confidence, be polite, very good. These all points are very, very good. And if you implement and have these qualities in yourself, then definitely you will enhance your personality and you will achieve your goal of your life. Okay? Think positive, respect others, no pain, no gain. Very good. Think positive. Abhijay is answering think positive. Correct. Hmm. So, according to myself also, you all have done very well and gave very nice points. But above all the points, no down. Do you know the meaning of this word tolerance? Tolerance. Do you know anybody the meaning of tolerance? Just write down the positive qualities first. After that, we will discuss about the meaning, Hindi meaning of all words. Okay. Tolerance. Second one is compassion. I am facing a trouble to write like that. So please leave it if there is any compassion. Integrity. Are you looking clearly? Friendly nature with our environment, correct. Four, truth. 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 Five, peace or non-violence. Discipline. Good behavior. And peace. Are you writing all the points? In point 3, what you write? Integrity. 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 So let me to speak all the points whatever I have written here.
So this is tolerance. So confirm and note down all the points. Okay. Second one is compassion. Third one is integrity. Fourth one is truth. Fifth is non-violence. Sixth is discipline. Seven is good behavior. Eight one is peace. Okay. Now let's discuss the Hindi meaning of all the good qualities which we should have in ourselves. Okay. Tolerance means क्या होता है? कोई आंसर करेगा? Anybody can answer in Hindi. You can text in सहन. सहन शक्ति होता है बच्चों. सहनशीलता. सहनशीलता या सहन शक्ति भी कह सकते हो. ठीक है. किसी चीज को बर्दाश्त करने की शक्ति, उसको टॉलरेंस कहते हैं. हर इंसान में अपने गुस्से को काबू करने की सहन शक्ति होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि अगर किसी तरीके का विपदा या मुसीबत आता है तो जिसके पास ये टॉलरेंस की भावना होती है वो बड़े से बड़े समस्या को हल करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ टू मूव अहेड इन अवर life and get the destination of our life. Okay. Second word is compassion. Compassion का मतलब किसी को पता है? Type of personality. Compassion. Kindness. Superb. A third answer. Kindness. Yes, compassion means हिंदी में हम कहेंगे दया या करुणा की भावना. दया या करुणा. यानी कि अगर कोई समस्या में है, तकलीफ में है, तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम उसके समस्या को दूर कर सके, उसके तकलीफ को कम कर सके. ये काइंडनेस की भावना हर इंसान में होनी चाहिए और जिस इंसान में नहीं है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है. ठीक है बच्चों. हाँ. नेक्स्ट वन इज इंटीग्रिटी. INTEGRITY. इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स टेक्स्ट मी फर्स्ट. इंटीग्रिटी. Nobody answering. Integrity means एकता की भावना. क्या होता है? एकता की भावना. ठीक है. Truth means everybody know, I think. Everybody know what is the meaning of truth? सत्य या सच्चाई का साथ देना. ठीक है. Are you getting me? Please answer me. आप लोग को समझ में आ रहा है? दिख रहा है बोर्ड? अभिज्ञान. गुड. हाँ. इंटीग्रिटी, टीम वर्क आप लोग आंसर कर रहे हैं. गुड. नॉन वायलेंस मीन्स बच्चों बताओ. अहिंसा. वेरी गुड. अहिंसा. नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा. अहिंसा को अगर समझे तो हम कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं? अहिंसा मतलब किसी भी जीव जंतु या इंसान को हम जो है किसी भी तरीके से अगर हम तंग नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं और जीने दो और जियो और जीने दो की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो उसे अहिंसा कहते हैं. ठीक है. 6 पॉइंट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन को हम लोग क्या कहेंगे? अनुशासन. क्या कहेंगे? अनुशासन. गुड बिहेवियर. Yes, like Gandhi ji. Very good. Abhijay. Yes. The great example of non-violence. Everybody know in all over the world. The best example, the great example for non-violence. None other is our Mahatma Gandhi. Move on. Good behavior. Good behavior. उच्च आचरण.
या व्यवहार, ठीक है, उच्चतम आचरण या व्यवहार. लास्ट वन इज पीस. पीस मीन्स शांति, है ना. अब I written here the point peace at last. Do you know why? Why I have written the last point as peace? Jhansi ki Rani, calm, okay, साख. मेरा क्वेश्चन है कि मैंने शांति को लास्ट पॉइंट में क्यों लिखा है, कोई गैस करेगा? Okay, let me to answer. I have written this last point as peace because if we follow and implement these all good and positive things in our life, so that at last we can achieve the peaceful life. Okay, because कभी कभी शांत रहना ही अच्छा होता है. Okay, it is also partially correct answer, but try to understand whatever I'm going to speak with you, that if we want the real happiness or peace in our life, we should follow at least these all point and implement this all point in our life. Only after that we can achieve the real success, the real achievement, and the destination of our life. इन सब बातों को अमल करने के बाद ही हम एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे. हमारा जो है जीवन उत्तम हो पाएगा और हम सही मायने में रियल सक्सेस और हैप्पीनेस को प्राप्त कर पाएंगे. सो माय सेशन इज गोइंग टू एंड नाउ. So at last, I would like to suggest you all and request you all, please keep yourself in your house and stay safe. And today's homework is to explain these positive qualities. These positive qualities which we have discussed point wise today in our class. Have you understand? सबको समझ में आया? आप सबों को ये जो हम लोग पॉजिटिव क्वालिटीज, ये जो सही और उत्तम हमारे गुण हैं हमारे अंदर जो होने चाहिए, उनके बारे में जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है. 1, 2 and above line, in 1 or 2 above line, you have to explain all the points and write down the objective of your life.